Hello everyone. So here is the next session of chapter 2, that is from hunting gathering to growing food. So as we have talked earlier that before 2 million years we are just hunters. Okay? We depend on hunting to eat. But as we move from ages to age, from Paleolithic, Neolithic, Mesolithic, then Neolithic, then we comes to Rig Veda term. Rig Veda is further divided into two terms, that is earlier Rig Veda and later Rig Veda. So we are discussing about the life of the earliest people, means from hunting gathering, they have developed themselves and growing food. Okay, they know how to grow the crops, they know how to domesticate the animals and so on. We have got the remains of the earlier tools, means uh, like the plug. Okay, means by that tool or by that toy we can consider that they may be aware of the agriculture. Okay, and once if they know about the agriculture, they also know about the domestication. Means now the early people don't have to travel from one place to another, okay, in search of food. Means now they have food, their own food they are making, and also to get the meat, they have domesticated the animals. Okay, देखो उन्होंने क्या किया होगा, they have started the domesticating animals, या उन्होंने क्या किया, पहले वो hunting के लिए भागते थे उनके पीछे, है ना, then suddenly they have seen that the cow, dog, sheep, they are not aware of they are not afraid of the man. मतलब वो उनके पास जाते, वो भागते भी नहीं है. तो a thinking might be come in someone's mind that if they don't afraid of us, then why don't we get means why don't we make them live with us. Okay, so by that thinking they might be started the domestication of the cow, sheep, dogs, etc. Okay, that if the agriculture does not grow properly, then they can eat the flesh of those animals. Okay, so basically now early peoples are well aware of the agriculture and the domestication. So how do we know about these peoples? So by inscriptions or archaeologist. Basically archaeologist is the person who studies the remains of the ancient times. The जो भी हमें remains मिलते हैं, like the plug toy, the plug cart, and the grains or the painting of caves, these all these are read by the archaeologist. They have found some of the things like hunter gatherer made and used. Means the toy, first of all, look, in earlier time or in 2 million years ago, uh, early people don't have any friend. Okay, only stones are there, कि उनके पीछे कभी कोई वाइल्ड एनिमल लगा, दे आर रनिंग. ओके, फिर उन्होंने उनके माइंड में आया होगा व्हाई डोंट वी यूज दीज स्टोन्स, दीज आर द हार्डेस्ट थिंग दैट वी हैव, ये सबसे हार्डेस्ट थिंग है. ओके, सो दे ट्राई टू स्केयर द वाइल्ड एनिमल्स. देन आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट टू मेक द टूल्स इन अ वेल शेप्ड मैनर, है ना, नुकीले टाइप के बना लिए. फिर जैसे ही वो मीजोलिथिक एज में आए, दे हैव स्टार्टेड टू मॉडलाइजिंग देयर स्टोन्स, है ना, बहुत अच्छा शेप देना स्टार्ट किया उन्होंने, हैंडल करना स्टार्ट किया उसको. देन इन नियोलिथिक दे नो हाउ टू यूज द टूल, और दे ऑल्सो यूज टू पॉलिश देयर ओन टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन्स. ओके, सो they have made these type of stones. Means if archaeologists have found something that the stone is very well polished. Okay, so that we can imagine that it may be of neolithic age, है ना, वो neolithic age का भी हो सकता है. So like this way we can know about the people. Now choosing a place to live in, so we have found many of the caves, many of the sites like Bhimbetka in our Madhya Pradesh, Hongsi. Okay, the Karnool caves, very important. Okay, why the Karnool caves are important? Because traces of ash. अब ash कहाँ से आएगी? When we burn something. Okay, when we burn something, then only we can get the ash. So the traces of ash founded in Karnool caves. Okay, now moving further, so we have now about 1200 years ago there were a major changes in the climate of the world. Okay, now बच्चों, the early peoples know how to
grow food and how to domesticate animals. Okay, so after this process is going on, so from 2 billions to 12,000, the climate is something else. Okay, but around 12,000 years ago there were a major change in climate. Means अब जो climate होता था वो और warm होने लगा, है ना. The climate gets warmer, then warmer climate is more suitable to agriculture. ओके, तो अब वहाँ खेती भी ज़्यादा होने लगी. सो दिस इन टर्न लेड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर्स, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास. ओके, सो बेसिकली इफ समवन आस्क्ड दैट व्हेन डिड द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स हेल्ड, ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट कब हुआ, देन यू हैव द आंसर दैट अराउंड 12,000 years ago. Okay, because all these changes are done with the help of atmosphere only, or in the environment only. Okay, so now the beginning of farming and herding. So this we have already discussed, how they begin to farm and how they begin to herding means domestication. Now a new way of life. So if you plant a seed, you will notice that it will take some times to grow. अभी भी आप घर पे देखते हो, अगर हम कोई भी फसल उगाते हैं, कोई भी grain, if we sow any grain to the earth, then it will take some time to grow, although it needs water also, है ना. उसको watering, weeding, we means we have to take care of the plant. Okay, then till the grain ripen, जब तक उसके दाने पक नहीं जाते, and then the grain had to be used carefully. Okay, so now अभी तक क्या था, they have started the agriculture, they have started the domestication, so a new way of life they are living, है ना. पहले क्या था, वो यहाँ से वहाँ, उनका कोई घर तो था नहीं. ओके, दे डोंट हैव एनी हाउसेज, दे जस्ट sleep under the tree or in the forest itself. Okay, and on food they are dependent on the wild animals and the berries or something that they get from the forest. So now they are living a new life. Okay, early people's living a new life, but now they started the agriculture. Okay, so सबसे पहले जैसे उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने एक स्मॉल प्लेसेस पे, लाइक इन दिस पच ऑफ लैंड, दे हैव स्टार्टेड टू ग्रो द क्रॉप. ओके, बट वंस दे आर वेल अवेयर ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप, मतलब एक दो बार जब उन्होंने उगा के देख लिया दैट येस वी कैन डू द एग्रीकल्चर मच बेटर देन दिस. ओके, और अगली साल के लिए हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं. ओके, मीन्स दे हैव अ थिंकिंग दैट वाई डोंट वी ग्रो दिस इन अ लार्ज स्केल. अब उस टाइम पे क्या था, क्या इतनी इंडस्ट्रीज थी नहीं, चारों तरफ क्या था, ग्रासलैंड मीन्स द प्लेन्स. ओके, सो दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग दैट वी कैन ग्रो दिस ग्रेन्स इन अ वाइड लार्ज और vast areas. Okay, so they have started the agriculture doing in that way. Okay, so now they have lot of food, now they have lot of grains, so these grains have to be stored carefully, वरना वो खराब हो जाएंगे. Okay, so for that only they have made many of the pots, or they have digged the earth. ओके, अर्थ में गड्ढे कर दिए और उसमें वो क्या करने लगे, डग पिट्स इनटू द ग्राउंड एंड दे हैव स्टोर्ड देयर ग्रेन्स. ओके, नाउ स्टोरिंग एनिमल्स. सो यस, वी नो दैट एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. ओके, दे मल्टीप्लाई नेचुरली. बिसाइड्स इफ दे लुक आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क, है ना. अगर हम उनकी देख रेख करते हैं, देन दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ मच इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट. ओके, मतलब कभी भी ऐसा हुआ कि सूखा हो गया, वी डोंट हैव ग्रेन्स टू ईट, देन वी कैन ईट देम ऑल्सो. ओके, सो बेसिकली दे नो दैट दे आर द स्टोरेज ऑफ फूड, है ना, वो भंडार हैं एनिमल्स. दैट इज़ वाई दे हैव स्टार्टेड स्टोरिंग द एनिमल्स. ओके, और वी इनडायरेक्टली वी कैन से दैट द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द फार्मर्स एंड हर्डरर्स. सो येस, आर्कोलॉजिस्ट, दिस इज द वर्क ऑफ आर्कोलॉजिस्ट. दे हैव done, they have founded the first farmers, who were the first farmers and the herders. Okay, so there are many places where many places where we have found the remains of grain, है ना. हमें छोटी छोटी grains के remain मिले हैं जो something about 1200 or more than that 20,000 or 30,000 years ago. Okay, so look at the image here, this map.
the blue square, this like Barzaham, Mehrgarh is one of the important site of Indus Valley civilization. Okay, remember that. This Chand, Darjeeling heading. Okay, so all these caves or all these sites, in these sites we have found the remains of grain. Okay, so means from here we can say that, अब हम ये clear तो बता नहीं सकते कि this site have the oldest grain. Okay, but we can say that all these are of same time and they belongs to Paleolithic age. Okay, Paleolithic to Mesolithic age. Okay, now how did lead towards a settled life? तो देखो, they have started storing the animals. Okay, and they have started to grow the crop. अब हमने crop को पहले क्या किया, पहले हम seed को बोते हैं नहीं, first of all we will plug the field. Okay, plug the field, so the field may be suitable to grow crops. Then we will sow the seed, then we will water. Okay, then we will give the weedicide. After that, what we will do, we will take care of that plant. This process will take up to 2 to 3 months. Yes, ripening of grains. Okay, so all these process have gone through in the time of 2 to 3 months. Okay, means we have to take care of this agriculture for 2 to 3 months. Okay, also we have to take care of our animals. So this forced early men to settle at one place. Okay, all these things forced early men to settle at one place. So stone tools have been found many sites as well. Yeah, so अब एक जगह रहने लगी, so बहुत सी चीज़ें थी ऐसे, है ना, how to plug the field. Okay, so for that they have made many tools out of stones. From many sites they have been found also, बहुत सी sites से हमें ऐसा पता चला है. Okay, the early age is divided into 3 ages. First is Paleolithic age, second is Mesolithic age. Mesolithic, look, देखो पहले क्या था, only stones are the friends of we, means the early peoples. Okay, तो लिथिक का मीन्स जो होता है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्टोन. ओके, सो पैलेलिथिक सबसे पुराने जो स्टोन्स थे, है ना, मीजोलिथिक जो मिडिल एज के स्टोन होंगे, एंड नियोलिथिक जो नए एज के स्टोन्स होंगे. ओके, दैट इज वाई ऑन द बेसिस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ स्टोन्स द आर्कोलॉजी हैव डिवाइडेड our past into 3 ages, that is Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. Okay, so now if I ask that what type of tools are there in Paleolithic age, so they are very rough. Okay, because early people just use the stone as it is. फिर उन्होंने देखा होगा कि भाई ये स्टोन बहुत नुकीला है ना, दिस इज़ वेरी शार्प, और हम इससे बहुत अच्छे से काट सकते हैं, या वी कैन हंट द एनिमल मोर ईजियर वे. ओके, सो द थिंकिंग माइट हैव कम इन समवंस माइंड, किसी अर्ली पीपल के माइंड में ये आया होगा, और जब उसने डेवलप किया, है ना, व्हेन ही स्टार्ट मेकिंग द रफ टूल इनटू अ शार्प वन, द एज टर्न्स फ्रॉम पैलेलिथिक टू मीजोलिथिक, फिर मीजोलिथिक में आ गई. ठीक है, अब क्या हुआ, समवन थॉट दैट दिस टूल वुड बिलोंग्स टू माई grandfather or father of grandfather. So okay, so we have to take care of this tool. So they have started to polishing the tool, and polishing started in Neolithic age. Okay, so now many kinds of earthen pots have also found. Yes, from the sites many of the earliest means stones are found, sorry, earthen pots are found. Okay, इसी pots में वो क्या करते थे, अपने grains को store करते थे. Okay, so yes, the Mehrgarh. Okay, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट. अब यहाँ से हमें क्या मिले थे, द रिमेन ऑफ ग्रेन्स. ओके, सो नाउ मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न हाउ टू ग्रो बार्ले एंड वीट. मीन्स बार्ले एंड वीट आर द मेजर क्रॉप्स दैट वर ग्रोन इन द साइट ऑफ मेहरगढ़. ओके, आज की डेट में ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान. ओके, सो नाउ at this site many animal bones were found, bones of wild animals such as deer, pig, and also bones of sheep and goat. अब देखो bones मिली है, means we can say that they have started to domesticate
sheep, goat, deer, and pig, etc. Okay. Now other finds at Mehrgarh include remains of rectangle. Yes, this is important line, so you have to underline. In Mehrgarh, the square and rectangular houses, the remains of square and rectangular houses in this way, मतलब इतने अच्छे planned houses बनते थे उस time पे. Okay, can you imagine how intelligent those early humans were? Okay, they don't have any technology, then also they they have made the house in such a manner. Okay. इसके बाद भी हम पढ़ेंगे व्हेन वी कम टूवर्ड्स द 750 एडी, तो वहाँ पर क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ है ना. और इंडस वैली सिविलाइजेशन में यू विल लर्न दैट द स्क्वायर हाउसेज, नाउ a city has been made that is called Harappa or Mohenjo-daro, which have the rectangular shaped houses 1 to 2 stories. So उस टाइम पे 2 stories तक के houses थे, है ना. एंड दे हैव वेल प्रॉपर मेंटेन ड्रेन सिस्टम, है ना, नालियाँ भी हुआ करती थी. ओके. सो नाउ दिस इज द केव पेंटिंग, इट इज़ ड्रॉन इन द फ्रांस. ओके. सो इसमें जो कलर्स यूज हुए हैं, दीज कलर्स में बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेटल्स. अब उस टाइम पे मेटल्स तो क्या हो गए थे, नोन थे, है ना, पता चल गया था मेटल्स का. तो दीज कलर्स में हैव बीन यूज्ड. ओके. सो नाउ a Neolithic site, so find Turkey in your atlas. This is not you have to do. Yes, so let's recall. So hunter gatherer choose to live in caves and rock shelters because, अब क्यों रहना चाहते थे वो caves, rock और shelter में, क्योंकि these caves provide them protection. अब protection किससे चाहिए थी उन्हें? Yes, so from winds, rains, sunlight and also from the wild animals. Okay, because we used to sleep at night. Okay. And in search of prey, the wild animals come out at night only. Okay, तो हम सोते रहे, पता चला वो हमें खा गए. Okay, so grassland developed around not 10,000, it is 12,000 years ago. Okay. Yes, so this question answer we have already done, so as this is the revision video. Okay, so I hope you understand the entire chapter. Now you just have to do what you have to do, you have to read the entire chapter again so that it will be very clear to you.